at the level of L1, because L1 is transpyloric plane. The first structure will be pylorus, second structure will be the hilum of the kidney, third structure, rather I would say the first structure which we should remember at the level of L1 is cornus medullaris. The spinal cord ends there at L1. Okay. Then the origin of superior mesenteric artery. Okay, origin of superior mesenteric artery, duodenojejunal flexure is also there at L1. Neck of pancreas is also there at L1. So many structures which are present at L1. Most important of that, which you should remember, spinal cord ends at L1. Transpyloric plane is L1. Okay, thank you. So now with that introduction, I will talk about the anterior abdominal wall. Anterior abdominal wall. Okay. Anterior abdominal wall has following layers. First is skin, second is superficial fascia. Superficial. No. Deep fascia. 1, 2, 3, start. So anterior abdominal wall, when I asked this brilliant student, he said skin. Then what did you say? Superficial fascia. Then you said? Deep fascia. Deep fascia is absent in the anterior abdominal wall. Okay. Why deep fascia is absent in the anterior abdominal wall? So that we can enjoy sandwich ice cream at Rastunji's. Okay. So deep fascia is absent here, and then after eating ice cream, you become happy, and what do? Smile. So that smiling is possible because there is no deep fascia in the face. So therefore, God has, not put deep fascia at two places so that we can eat well. If there would have been a deep fascia, sheet of deep fascia over here, then, abdomen could not have bulged. फिर वो गुज्जू मारवाड़ी के शादी में आप कैसे खाते थे जाके? एक चपाती खा के बाहर आने, चपाती भी नहीं मिलते उधर, मतलब क्या थेपला ये वो. So you can eat well and then smile. Or smiling would not have been possible if there would have been deep fascia here. So always remember, deep fascia absent at two places so that we can eat well and smile well. Okay. Now one second. Banana. But उसका disadvantage है कि if God would have put deep fascia here, our abdomen would have been flat like कौन से हीरो या हीरोइन का नाम याद आता? हाँ, जरा जोर से बोलो. हाँ, ऋतिक रोशन. हीरोइन? मैंने देखा नहीं बाबा किसी का abdominal wall में क्यों देखूं? But fitness wise, समझते हैं. यही देखते हैं. You should just. Hrithik Roshan is the correct answer. Thank you. फिटनेस जो गुरुज है हमारे, इवन लेडीज एक्टर्स में शिल्पा शेट्टी, योगा, दिशा पटनी, वो क्या करते हैं मालूम नहीं, लेकिन एब्डोमेन तो फ्लैट है. Most of the heroines, they have that because they work on that. Okay. So our anterior abdominal wall would have been flat like that. But then खाने पीने के वांदे हो जाते हैं. इसलिए जो है मिला है खुश रहो. So there is no deep fascia. Directly after superficial fascia is external oblique muscle. In thorax, जो कि आपने एकदम superficially attend किया है, पढ़ा नहीं है, उसमें 3 मसल्स थे. What were the 3 muscles? Narvekar, external intercostal, internal intercostal and Inner. transversus thoracis. Here we have 2 muscles, external oblique, internal oblique and transversus abdominis. Transversus abdominis. One thing about these muscles which you should know is external oblique takes origin from
एक्सटर्नल ऑब्लिक टेक्स ओरिजिन फ्रॉम लोअर 8th रिब्स, तो उसका ओरिजिन ऊपर से, ओरिजिन ऊपर से, ओके। यहाँ पे मैंने प्यूबिक सिम्पाइसिस निकाला है, ये okay, and then all these muscles they take origin like this, and as they come medially over here they turn into aponeurosis. So these muscles, external oblique, internal oblique, transversus abdominis, are there on the lateral aspects, okay. But this external oblique, internal oblique, 1, 2, 3, start. external oblique, internal oblique, transversus abdominis are there on the lateral aspect, but in the midline there is a muscle called as rectus abdominis, which is an example of what type of muscles? What are the different types of muscles? Strap muscles, then based on the fasciculi, pinnate muscles, unipinnate, bipinnate, then strap muscles. So this rectus abdominis is an example which lies in the midline, is an example of strap muscle with tendinous intersections. Strap muscles with tendinous intersections. So what is that tendinous intersection? In this tendinous intersection there is no muscle. There is no muscle. Okay, so there are two rectus abdominis. So then, if person does exercise of the rectus abdominis muscle, this muscle mass will increase, but these tendinous intersections which are there will be no growth. So then they will bulge out. Yes, you are understanding what I am talking about. They will bulge out. So then 1, 2, 3. मतलब ये side का 1, this is 1, 2, 3 and 4, 5, 6. This is 6-pack. So for that person has to do exercises by which rectus abdominis contracts. So crunches, abdominal crunches. Okay. तो कुछ लोग रहते हैं जो 6-pack से खुश नहीं रहते, because there is one tendinous intersection here also. वो लोग और करते. Then 7 and 8-pack. You must have heard of 6-pack, but you have heard of 8-pack? Yeah? Okay, 6-pack, 8-pack. What is ours? Family pack. How pure? This is called as family pack. Okay, thank you. So this muscle, you should understand. आपको day 1 पे सिखाया था हमने वो classification of muscles, initial few days. Pinnate muscles, strap muscles. Sartorius is a strap muscle, right? Okay, parallel fasciculi, oblique fasciculi, right? तो parallel fasciculi, fusiform muscles, strap muscles, याद आ रहा है क्या? हाँ? फिर muscles with tendinous intersection. So ये कौन सा muscle है? Rectus abdominis. तो suddenly मैं उस पे jump मारा, sorry. हम लोग कहाँ थे हम? So external oblique turns into aponeurosis, and this aponeurosis from both the sides, ये side का aponeurosis, अभी aponeurosis, ये side का aponeurosis, their fibers will intermingle with each other like this, and they will form straight line. Actually draw करना चाहिए, straight in between called linea alba, where aponeurosis. आपको मालूम है linea alba? कैसे मालूम? कौन है? रिकॉर्डिंग क्या बताया लिनिया अल्बा के बारे में उन्होंने? इतना ही बताया ना, उससे ज्यादा लिनिया अल्बा. नाउ दिस लिनिया अल्बा पे इंटरनल ऑब्लिक का भी एपोन्यूरोसिस होगा, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का भी एपोन्यूरोसिस होगा, सबके एपोन्यूरोसिस. अदर ये रेक्टस एब्डोमिनस जो है ना, उसको कवर करके रेक्टस शीट बनाते हैं, व्हिच दत्ता सर इज गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. वो कैसे रेक्टस शीट बनता है. तो दो रेक्टा है इधर, एक रेक्टा इधर, एक रेक्टा उधर है. तो किसी को कुछ हो गया, एब्डोमेन आपको ओपन करना है,
इधर कट मारा झूम, अंदर गए टूम, अटक से कुछ निकाला, ब्लड है, ये है, ऑपरेट करके बाहर गए। अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं करने का। बस दिस इज द वीकेस्ट एरिया, दिस इज द लीनियर अल्वा इज द वीकेस्ट एरिया थ्रू व्हिच यू कैन इजीली एक्सेस, बट उसके बाद हीलिंग hernia, abdominal hernia is very common after that, abdominal hernia, okay. And then उसका जो lower margin है ना, lower margin, see this is the lower margin, gets attached to the pubic crest, then goes to the anterior superior iliac spine, and insertion is on the outer lip of the anterior 2/3 of the iliac crest. Oh, iliac crest, hip bone जब आपको सिखाया था, तो we said the iliac crest anterior 2/3 has a outer lip, it has a intermediate area, it has a inner lip. आज घर पे वापस जाओ और वो एब्डोमेन के पहले इंफीरियर एक्सट्रीमिटी का बुक है, वो खरीदो। वो बुक जब आप खरीदोगे तो आपको दिखेगा कि एक्सटर्नल ऑब्लिक का कलर अलग है, इंटरनल का अलग है, बिकॉज एक्सटर्नल ऑब्लिक का इंसर्शन यहाँ पे, इंटरनल ऑब्लिक का ओरिजिन यहाँ से, and lower margin of the external oblique which runs from the pubic crest, pubic tubercle to AS, anterior superior iliac spine, is called as inguinal ligament. तो inguinal ligament आपने सुना था जब लोअर लिम्ब पढ़े थे, बट हमको तभी मालूम नहीं था, इट इज नथिंग बट अ लोअर फोल्डेड मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, ओके, external oblique muscle बोल सकते हैं, okay, the lower margin of the external oblique muscle which runs from pubic tubercle to anterior superior iliac spine, okay. उस सराटे सर उस एपोन्यूरोसिस में एक ओपनिंग है, दोनों साइड एक ओपनिंग है। क्या सीखा है फिजियो वालों ने इसके बारे में, बोलो? साइट ऑफ हर्निया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग, साइट ऑफ हर्निया, ये सीखा, पोटेंशियल साइट, पोटेंशियल साइट। अरे बाबा पहले उसमें से क्या है, देखो इधर नीचे स्क्रोटम है, बराबर है, स्क्रोटम है, वो स्क्रोटम में स्पर्मेटिक कॉर्ड जाना चाहिए, जो टेस्टिस से, जो टेस्टिस यहाँ पे है, वहां से जो स्पर्म आएगा वो लेके जाने, सो दैट स्पर्मेटिक कॉर्ड कम्स आउट ऑफ द एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बोलते हैं उसको, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। आपके 3rd MBBS तक आपको ये परेशान करता रहेगा, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग which is slightly above and lateral to the pubic crest, pubic tubercle, slightly above and lateral, okay. So what is superficial inguinal ring? It's a opening in the external, superficial inguinal ring is opening in the external oblique aponeurosis. Why there is opening? for the spermatic cords to pass. Not a potential site of hernia, what's taught to you by the other departments. It is. It is from where the spermatic. It is from where the spermatic cord. Spermatic cord. उस spermatic cord में क्या है? There will be blood vessel for the testes, blood vessel for the vas deferens. There will be vas deferens. Some things in spermatic cord will be going down to the testes. Some will be coming up from the testes. Going down to the testes will be testicular artery. Going down to the testes will be artery for epididymis, artery for the vas deferens. Going above is the vas deferens, which is carrying the sperms. Going above is the pampiniform plexus of veins.
pampiniform plexus of veins which will be taking the blood away from the chest. Okay, तो ये यहाँ पे. Now the second muscle is, ये आपले lectures किती आहेत आज? दत्ता सरांना फोन केला? मी मेसेज टाकला. कोण आहे? आपके पीजी गाइड को फोन लगा, बोला सर आए हैं क्या? बोले आप आराम से आइए सर, 9:30 तक भी चलेगा. ओके, रिप्लाय टाइमिंग्स काही 9:30 आफ्टर 9:30. कुठे आपण? नाव इंटरनल ऑब्लिक will take origin from the inguinal ligament. Okay, from the inguinal ligament, from the intermediate lip, and the fibers will go up. Internal oblique fibers will go up, external oblique fibers will come down. Okay, and then this will go and get inserted over the lower ribs. This was taking origin from the ribs, insertion down. This was taking origin from iliac crest and getting for origin from iliac crest, going for insertion up. Then there is transversus abdominis, which is origin is from the inner lip. काय बॉडी किती नंबर काढायचा? कुठलाही काढा, दोन काढायचं. जास्त नाही काढायचे. नाही तुम लोग करने वाले हैं ना डिसेक्शन? आइसक्रीम सैंडविच खाने को जाने वाले हैं. Then there is inner lip. From the inner lip, the transversus abdominis. Okay, it also takes origin from the lateral 1/3 of the inguinal ligament. So transversus ऐसा आएगा. Okay, transversus. That will also end in the aponeurosis. Okay. 1, 2, 3, start. So external oblique muscle takes origin from above, lower 8 ribs, and its fibers are directed downwards like this. Internal oblique takes origin from below, and fibers go upwards like this. While external oblique is inserted on the iliac crest, anterior to third outer lip, internal oblique is from the intermediate area origin, and insertion is on the rib. So fibers of external oblique go like this, internal oblique go like this. While transversus abdominis also is from the inner lip, the origin, and also from the inguinal ligament. Its fiber go like this. ऐसा क्यों? Why? Did the other people teach you? People in the sense, apart from anatomy, anybody has taught you this? Only anatomists know this. Because external oblique sends the fiber like this, internal oblique sends like this, transversus abdominis sends like this. They are forming a mesh. Why the fibers are like this? ऐसा ही भगवान ने ऐसा ही टाइम पास में अब इसको क्या करें ऐसा इसको क्या ऐसा इसको क्या ऐसा. No, this arrangement is to form a mesh so that there is no herniation of the organs. अरे यहाँ पे 1.5 किलो का लीवर है, ओके, और आप लोग 2-3 किलो खा लेते हो दिन भर में, ओके, फिर वो सब that should not cause pressure on the anterior abdominal wall and cause herniation. Therefore there is a mesh like arrangement of fibers. Lower animals, this arrangement is more important because we are at least in standing position. They are like this, so their most pressure is on the anterior abdominal wall. So for this mesh like arrangement is most important in the lower animals to prevent herniation, and even in humans also. Thank you. Okay, transversus abdominis तक पता चला. Rectus abdominis के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा. शायद वो पॉज कर रहा. So now I have already taught to you the layers of the anterior abdominal wall, and now, but I taught you from the anterior view. Now I am teaching it from the in a parasagittal section, not sagittal section. Parasagittal section में आप देख रहे हो
देखिए मेहरबान कदरदान, ये पहला लेयर है, लेयर नंबर 1 जिसका नाम है स्किन। लेयर नंबर 2 जिसका नाम है सुपरफिशियल फेशिया। हाँ, इस सुपरफिशियल फेशिया के बारे में मैंने आपको अभी तक ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बिकॉज ये सुपरफिशियल फेशिया जो है वो सुपरफिशियल फेशिया उसके 2 लेयर्स होते हैं, मेम्ब्रेनस ओके एंड फैटी एंड मेम्ब्रेनस। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑन दिस, ये भी आपको सिखाएगा। So layer 2 is superficial fascia. Layer 3 according to Shalvo तेरा नाम अभी स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। What is layer 3 according to you? muscle layer. External oblique. Okay. U-turn मारा तुमने। और ये external oblique यहाँ पे नीचे मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या हो सकता है? Formation of inguinal ligament. Its lower margin forms inguinal ligament. Layer 4 is again a muscle. What is that muscle? Internal oblique. Layer 5 is again a muscle. खड़े लो। क्या है लेयर 5 का नाम? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। लेयर 6 बचा कर, मैंने आपके इसके बारे में सिखाया नहीं। क्या है? फेशिया ट्रांसवर्सलिस। लेयर 6 इज फेशिया ट्रांसवर्सलिस। इस फेशिया ट्रांसवर्सलिस में एक ओपनिंग होता है, इसमें एक ओपनिंग होता है फेशिया ट्रांसवर्सलिस में। सो दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज डीप इंग्वाइनल रिंग। दैट ओपनिंग इज कॉल्ड डीप इंग्वाइनल रिंग। एक्सटर्नल ऑब्लिक में एक ओपनिंग होता है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज superficial inguinal ring. Okay, superficial inguinal ring. Yudhishthir, from the deep inguinal ring, from the deep inguinal ring, the spermatic cord comes out first of the abdomen, then goes in the inguinal canal, and then comes out of the superficial ring and goes to the scrotum. समझे आपको? डीप एब्डोमेन में से कैसे एग्जिट मारता है वो? डीप रिंग, then inguinal canal, then superficial ring, and then कौन है? डर गया? रेकॉर्ड झालं. मेरे एक व्यू तो मिळतो त्याला. कौन है वो 1 व्यू वाला? मैं उसको पार्टी देने को तैयार हूँ। हाँ, तनिष्का ना? तनिष्का किधर? गाँव घाटकोपर का गाँव होता है। 7 एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू। ओके। 8 क्या हो गया है? काय रे चॉक आणता तुम्ही? खराब चॉक म्हणजे मिक्स केले दिसत. 8 PP parietal peritoneum. 8 is parietal peritoneum. मैं इसको 9 बोलूंगा, चलो इसको 9 नहीं बोलूंगा। ये इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस नट टुगेदर दे फॉर्म अ टेंडन
उसको कॉन्जॉइंट टेंडन बोलते हैं, उसको मैं 9 बोलता हूँ, इंग्वाइनल लिगामेंट को 10 बोलता हूँ, इंग्वाइनल लिगामेंट को 10 बोलता हूँ। ओके, मैं अभी जो बोलूँगा और सीधा रिकॉर्डिंग करूँ। क्या आपको, आपका क्या प्रेफरेंस है कि मैं एक बार बताऊँ और बाद में रिकॉर्ड करूँ या सीधा रिकॉर्डिंग करूँ? बट भाई फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ तभी आप ध्यान नहीं देते, तो यार रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहे हैं। Anterior wall of the inguinal, so this is the inguinal canal. This is the inguinal canal. उसका anterior wall is formed by 1, 2, 3 और ये internal oblique ना थोड़ा नीचे भी आता है, and 4 also, 1, 2, 3 and 4 internal oblique भी थोड़ा सा, okay, in the 2/3 only area, that roof 4 and 5 internal oblique and transverse abdominis. Everybody agrees to this? Then posterior wall, posterior wall 6, 7, 8 बघा ना इकडे, fascia transversalis, extraperitoneal connective tissue, parietal peritoneum and conjoint tendon 7, 8 and 9. सर आपके टॉपिक कौन नहीं लगा सर? यार 5 मिनट 5 मिनट हाँ। I am waiting also. अरे वेटिंग आउटसाइड ऐसा मेरे को एंजाइटी बन गई। मैं अंदर में बैठूं आपके जैसे एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट। Then in the 1/3 part conjoint tendon is there and floor is formed by inguinal ligament. Floor is formed by inguinal ligament. पुस्तक कोणी आणलंय? क्या बात है, काय नाव तुझं? नील शाह। नील मतलब शाह होना ही चाहिए। नील शाह नाम का तू मेरा 10वां स्टूडेंट है। One, two, three, start. So this, what I have drawn here is a parasagittal section, not in the midline, parasagittal section of the abdominal wall, where it's very nicely depicting the boundaries of inguinal canal. These are the 8 layers of the anterior abdominal wall. 1 is skin, 2 is superficial fascia, 3 is external oblique, 4 is internal oblique, 5 is transversus abdominis, 6 is fascia transversalis, 7 is extraperitoneal connective tissue, 8 is parietal peritoneum, 9 is a conjoint tendon formed by internal oblique and transversus abdominis, and 10 is the inguinal ligament, which is nothing but the lower margin of the external oblique. What forms the anterior wall? So this is the inguinal canal. What forms the anterior wall of the inguinal canal? 3 things: skin, superficial fascia, external oblique, where the superficial inguinal ring will be there, and also the internal oblique, okay, in the lateral 1/3. The roof is formed by these 2 muscles, internal oblique and transversus abdominis. Posterior wall is formed mainly by these 3 structures: fascia transversalis, where there is the deep inguinal ring, then
extraperitoneal connective tissue and parietal peritoneum, and also the conjoint tendon in the medial two-third. Roof is formed by these two muscles, internal oblique and transverse abdominis, and floor is formed by the inguinal ligament. So anteriorly there are 4 structures, posteriorly there are 4 structures, superiorly there are 2 structures, inferiorly also there are 2 structures. One is inguinal ligament also and part of lacunar ligament. So if you remember this diagram, you know the anterior wall, posterior wall, roof and floor of the inguinal canal. Thank you. दत्ता सरांना हवंय का बघा.